Assalamu alaikum. Hope so you are fine. Welcome to my YouTube channel. Today we discuss about the science of biology. In this video we discuss about the introduction of biology, branches and careers of biology, scientific method and biological method. What is biology? The word biology comes from the two Greek words bio and logos. Bio means life and logos means to study. So biology means the study of life. It tells us about the structure of living things and the processes that happening in them, like breathing, growth, reproduction and movement. Okay. Next हमारे पास divisions of biology. Biology is divided into three big areas: botany, zoology and microbiology. In botany, we mainly study about the plants, including the algae and fungi. We study about the functions, growth, reproduction, evolution and diseases of plant. In zoology, this branch explores the characteristics, classification, behavior and physiology of animals. मेनली हम zoology में एनिमल्स का बिहेवियर पढ़ते हैं और बॉडी फंक्शंस को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड द प्रोटिस्ट. Then anatomy. In anatomy, we study about the internal structures of the body, like brain anatomy and the heart anatomy. In physiology, we study about how the body and its parts work. ठीक है, जैसे how the heart pumps blood, so that is heart physiology. Then paleontology. In paleontology, we study about the ancient life from dinosaurs to the prehistoric plants, mammals, fish, insects, fungi, and even microbes. In genetics, genetics is a branch of biology that focused on the study of the genes, heredity, and genetic variation in the living organisms. Ecology. Ecology is the study of the relationship between the living organisms and their environment, इंक्लूडिंग बोथ द फिजिकल सराउंडिंग्स एंड अदर लिविंग थिंग्स. ठीक है, मेनली हम इसमें ये पढ़ते हैं कि हाउ द लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद देयर सराउंडिंग्स, लाइक एनिमल्स इन अ फॉरेस्ट. ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या है? एनिमल्स का इन्वायरमेंट है, और हम इसमें ये स्टडी करते हैं कि एनिमल्स जो अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट है हमारे पास कैरियर्स इन बायोलॉजी. बायोलॉजी Biology leads to many jobs like doctor, nurse, pharmacist, zoologist, microbiologist, veterinary medicine. ठीक है, in medicine and surgery we diagnose and treat the diseases and surgeries. ठीक है, pharmacology we study the drug effects and develop the medicines. In veterinary medicine we treat the animal diseases and animal surgeries. In microbiology we research on the microorganisms. Then her relationship of biology with other sciences. Biology connects with many other sciences like chemistry, physics, geography, mathematics, environmental sciences. ठीक है, in chemistry we study the chemical composition and reactions in the living things, example like photosynthesis and enzymes. In physics we explore the physical principles in the biological systems like blood flow and muscle movement. In mathematics, it helps in the data analysis, modeling, and statistics like population growth models. In geography, we study the habitats, ecosystems, and species distribution like biogeography. In environmental sciences, we understand interaction between the organism and the environment like conservation and pollution study. In computer sciences, it helps in the analysis and the stores the biological data like DNA sequencing and bioinformatics. In medicines, it applies the biology for disease treatments and health care like the vaccines and the surgery. Then has scientific method. The scientific method is a systematic way to solve the problems and answer the questions through observation and experiment. ठीक है, साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है वो स्टेप बाय स्टेप मेथड को यूज़ करता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. These steps are observation, question, hypothesis, then experiment, analysis, conclusion and report. ठीक है,
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या आता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, नोटिस करते हैं समथिंग, कोई इफेक्ट हो गया या प्रॉब्लम हो गया। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि हम कि एक प्लांट है जो सनलाइट में फास्टर ग्रो कर रहा है, ठीक है, देन अ प्लांट इन द शेड। तो ये हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। देन अ क्वेश्चन, हम अब अपनी ऑब्जर्वेशन को क्वेश्चन में जब हम चेंज कर देंगे, लाइक हम कह रहे हैं कि वाई डज द प्लांट इन द सनलाइट ग्रो फास्टर देन द वन इन द शेड। देन वी मेक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या, मेक एन एजुकेटेड गेस। हम अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि जो प्लांट इन द सनलाइट है वो इसलिए फास्टर ग्रो कर रहा है बिकॉज दे मेक मोर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं बाय कलेक्टिंग द डाटा। नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस में हम अपने रिजल्ट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। एंड देन कंक्लूड करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। इसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट है रिपोर्ट। रिपोर्ट में हम अपनी फाइंडिंग्स को हम शेयर करते हैं दूसरों के साथ, सो दैट वी कैन लर्न और रिपीट आवर एक्सपेरिमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास biological method. Biological method is a systematic way that the scientist use to study the living things. इसमें हम साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक सिस्टमैटिक वे को यूज़ करते हैं लिविंग थिंग्स के ऊपर एंड सोल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग द ऑब्जर्वेशन, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, टेस्टिंग इट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, एनालाइजिंग द रिजल्ट एंड ड्राइंग द कंक्लूजन्स। ओके, आगे बायोलॉजिकल मेथड की एग्जांपल है मलेरिया, ठीक है। हमने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करनी है। ऑब्जर्व हमने क्या किया कि एक सर्टेन रीजन में जो लोग हैं वो सफ़र हो रहे हैं, किस में, फीवर में, चिल्स में और वीकनेस में, ठीक है। देन क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द कॉजिंग दिस इलनेस, ठीक है, ये बीमारी किस वजह से हो रही है। देन वी मेक हाइपोथेसिस दैट डिजीज़ माइट बी कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज़, की जो ये डिजीज़ है वो मॉस्किटोज़ की वजह से हो सकती है। एक्सपेरिमेंट हमने किया, हमने ब्लड सैंपल लिया फ्रॉम द सिक पीपल दैट वी एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। हमने जो बीमार लोग थे उनका सैंपल लिया, ठीक है, और हमने उसको एग्जामिन किया अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो हमने क्या फाउंड किया, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, ठीक है। फिर हमने एनालाइज क्या किया कि डाटा शोड अ क्लियर लिंक बिटवीन द मॉस्किटो बाइट एंड द प्रेजेंस ऑफ द प्लाज्मोडियम इन द ह्यूमंस। देन वी कंक्लूड हमने क्या किया कि जो मलेरिया है इट इज़ कोज्ड बाय अ पैरासाइट प्लाज्मोडियम एंड ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। This is the malaria transmission cycle. Okay. Hope so you understanding my lecture. Thank you so much for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.